भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है। यह जानकारी डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान दी। इस योजना से मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पर्यावरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप को मदद मिलेगी। कार्यक्रम में 7 विजेता स्टार्टअप को 30-30 लाख की राशि भी दी गई। यह कदम भारत में नवाचार और नए व्यवसायों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। Is a national initiative designed to nurture the next generation of Indian innovators, entrepreneurs, and technology creators, anchored by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and Mercedes-Benz India. The program aims to empower early stage and growth stage startups, innovators who are building solutions for India's emerging economic, social, and sustainability priorities. The key objectives of the program are identify and support promising startups and innovators, align with India's national development priorities, foster innovation and entrepreneurship, enable lab to market transition, and strengthen industry academia collaboration. Moving forward with the program, I now request Mr. Sumit Gupta, Deputy Secretary General FICCI, to present the Green Certificate to Shri Sanjeev Singh, Joint Secretary DPIIT. Green Certificate is an initiative of FICCI where a thicket of trees is planted in the name of the dignitary at the Trees for Leopards, Nainital District, Uttarakhand. Thank you, sir. I would now like to request Mr. Sumit Gupta, DSG FICCI, to kindly deliver the welcome address. Thank you so much. Good afternoon, everybody. Well, it's a great honor and privilege for me to welcome you all for this particular program, which is FICCI Mercedes-Benz Bharat Innovation and Business Idea Challenge program. It's a great honor to have Shri Sanjeev Singh ji, Joint Secretary DPIIT, Government of India with us, Shri Sumit Jarangal, Director DPIIT, Mr. Venkatesh Kulkarni, Executive Director, Mercedes-Benz India. Thank you so much for kindly joining us. Since the time is short, I'll be very, very brief. We launched this program in December 25 with a clear purpose and vision to create credible national platform to identify, mentor and support early stage innovators at a critical stage of their journey. From the very beginning, the intent was not merely to organize a challenge, but build an enabling pathway, one that connects ideas with industry insight, entrepreneurship passion and institutional support and innovation with the real world impact. The FICCI team went across India, across various geographies, and met with various institutions, their incubation centers, and promoted this program, encouraged them to participate. And as a result, we received 800 entries for this particular program. When we launched this program, we have given an ambitious target of 500 to ourselves, but very happy to share we crossed that and we reached 800. And following the initial screening, we screened 579 startups. The second screening narrowed down further to 103, and then further 32 exceptional startups were shortlisted who are presenting their ideas today. Since morning, we are having the pitching sessions. They have been pitching their ideas to the panel of eminent juries, and out of which the 7 promising ones would be chosen. So at this point, I would like to express appreciation towards Mercedes-Benz India for their participation and commitment to nurturing grassroots innovation through a forward-looking CSR initiative. They believe that innovation must be supported at earlier stage stage of enterprise reflex. स्टार्टअप की शक्ति है। किसी ने जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी तो 400 स्टार्टअप थे और उस समय 10,000 करोड़ क्या 50 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता था। आज 10,000 करोड़ भी छोटा अमाउंट लगता है, क्योंकि अभी मेरी किसी फॉरेन वीसी वाले से बात हुई, जस्ट 1 बिलियन, बट probably this 10,000 crore in the fund 1 has entirely changed the startup ecosystem, and I am sure आज जो यहाँ के winners हैं वो इस फंड का फायदा उठाएंगे। और मैं आज एक और चीज आपसे दिल का बात शेयर करना चाहूंगा। We are among the world's oldest startup ecosystem.
रिमेंबर 4500 ईयर बैक मोहनजोदाड़ो में जो चीजें बनी थी, इंक्लूडिंग डांसिंग डॉल, मैं टॉय में हमेशा उसका एग्जाम्पल देता हूं, पर उससे भी मैं एक इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड कुतुब मीनार? वहां का पिलर किसने किसने देखा है? पिलर की क्या खासियत है? पिलर वाज मेड 2000 years back in Gupta period, and it is one of the best example of steel जिसमें कोई कोरोजन 2000 years में नहीं हुआ है। आज भी हमारे पास प्रॉब्ली वो टेक्निक नहीं है जिससे हम ऐसा स्टील बनाएं जो 2000 साल तक वेदर के पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है और तूफान आ रहा है, एक्सपोज टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो कहते हैं। तो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू से अच्छा रहा और अभी इमेंस पोटेंशियल है। तो आज मैं बात उन 7 विनर्स की नहीं करूंगा, वो 25 की बात करूंगा जिनको आज प्राइज नहीं मिल पाया या ग्रांट नहीं मिल पाया। बिल्कुल हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपको ये एक इस मुकाम की तरह लेना चाहिए। एक मंजिल जो है वो है कि हम स्टैब्लिश हो जाएं, बट रास्ते में तरह तरह के आपको मंजर आएंगे। कभी आपको ग्रांट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यू डोंट नीड टू गेट डिससेटिस्फाइड। एंड क्या होता है, हम लोग जो भारतीय लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम को दोष देना। हर स्टार्टअप यही समझता है कि हमारा आइडिया तो अच्छा है, दूसरा समझ नहीं। Really pleasure to be here in award ceremony of FICCI Mercedes-Benz India Bharat Innovation and Business Idea Challenge program. In India, innovation is not a trend. It's becoming a national strength, and program like this really witnesses it. Launched in December 25, initiative marked an important step in recognizing ideas, efforts, determination of India's emerging startups. Many thanks to FICCI for their strong partnership and continued support in strengthening India's innovation landscape. Through this program, Mercedes-Benz India aims to contribute to India's startup ecosystem by leveraging innovation, collaboration, responsible entrepreneurship. With guidance from DPIT and support from FICCI, this program and platform enables startups to present their ideas, engage with industry, engage with policymakers, test their concept against the real world challenges and expectations. Startups are vital to India's growth story. They drive innovations, generate employment, and help India's advancement in global value chains. More importantly, they embody courage to challenge conventions, build something new, persist despite uncertainty. 7 जो उनमें अच्छे स्टार्टअप थे, जो एक बहुत ही अच्छी जूरी के द्वारा उसको निर्णय करके 7 स्टार्टअप्स को सभी को 30-30 लाख रुपए का ग्रांट दिया गया। और ये मर्सिडीज बेंज, फिक्की और DPIIT के आपसी कोलैबोरेशन का आउटकम है और भविष्य में भी हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे जिससे अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता मिल सके। 10,000 करोड़ की अभी बात करिए, PM साहब ने 10,000 करोड़ की डिस्बर्समेंट करी है, तो उसको कैसे डिस्बर्स किया जाएगा? वो अभी स्कीम गाइडलाइंस आएगी, उसमें बताएंगे। अभी के लिए बस ये है कि स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ की फंड ऑफ फंड 2 की घोषणा की गई। Congratulations to all winners, but in our opinion, all startups who presented today, 32, all of them are winners. Mercedes-Benz itself was a startup 140 years ago. We are celebrating this year 140 years of innovation, and I'm really happy and proud that we are able to contribute and support the journey what FICCI DPIT has started, and we are looking forward to continue this in future as well. Thank MSME you. बहुत सारा जुड़ा हुआ रहता है MSME स्टार्टअप के लिए, जो MSME में जो सब होता है डेवलप होता है, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनियां उसका माल बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। स्टार्टअप बनाते थे ज़रूर है, तो क्या कॉर्पोरेट कंपनी जैसा मर्सिडीज कंपनियां बड़ी हैं, क्या उनको लाइनअप करेगी, उनसे माल खरीदेगी जिससे उनको और आगे फ़ायदा हो? Your question is valid. Generally startup selection ये पहला स्टेप होता है। जी
जनरली ये जर्नी होती है एंड जो हमारा प्रोग्राम है करंटली हमने बोला है फिक्की मर्सिडीज बेंज भारत इनोवेशन एंड बिजनेस एंड आइडिया चैलेंज प्रोग्राम जो है वो पूरा 18 मंथ्स का प्रोग्राम है. इसमें फिक्की एंड DPIIT आर इंस्ट्रूमेंटल सपोर्टिंग अस फॉर हैंड होल्डिंग ऑफ द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इट्स नॉट ओनली वन डे इवेंट. It will be continue for next 12 months to make them ready, industry ready, teach them and take them ahead. So it's a joint initiative and it's a journey. It's not a one event. This journey is short term or long term? The journey always continues from Mercedes-Benz because Mercedes-Benz believes. Challenge program. We extend our heartiest congratulations to all other 25 startups who have participated in today's program. We also extend our gratitude to everyone who has been part of this important nation building initiative and contributed to making today's program truly meaningful. We would like to extend our sincere gratitude to Shri Sanjeev Singh, Joint Secretary, DPIIT Government of India, for his inspiring address. Our special thanks to Mr. Sumit Jarangal, Director from DPIIT Government of India, for his gracious presence today. Our special thanks to Mr. Chad Kaddar for his support throughout the program. We thank DPIIT for continued commitment and support to strengthening India's innovation and startup ecosystem. We would also like to convey our special thanks to Mr. Venkatesh Kulkarni, Executive Director and Head of Operations from Mercedes-Benz India, for his encouraging address and his dedicated involvement in this program. Our sincere thanks to Mercedes-Benz India for the steadfast support in nurturing innovation through a meaningful industry partnership. This program stands as a powerful example of what collaborative commitment between industry and institutions can achieve. Thanks to Mercedes-Benz India and team, Mr. Shyam Sundar, Mr. Ajinkya Kalbor and Mr. Nikhil Desai for their support in making this program a big success. We would further like to acknowledge the invaluable contribution of our jury members, evaluators and ecosystem partners whose time, expertise and thoughtful deliberations have upheld the credibility and excellence of this process. It is our great pleasure to once again congratulate the 7 outstanding startups who have been recognized today for their innovation, impact and future potential. On behalf of FICCI, I once again extend sincere thanks to all partners, participants and guests for your presence and support. Your engagement reinforces our shared belief in the power of innovation to shape India's future and advance the vision of Viksit Bharat 2047. Thanks to entire FICCI team for their support throughout the program. They were working tirelessly for the program for the last 3 months. Thank you.